Bismillahirrahmanirrahim. Hi, it's me Hamza Anwar and you're watching Compare Education Pakistan. Today we are going to do the part 2 of Unit 12, The Old Man and His Grandson, from the book English Language for Class 9, Balochistan textbook, Board, Quetta. So let's start. The first word is frequently. It means कثरत से, तसलसल से. Finally. It means आखिर में, आखिरकार. Corner यानी कोना. Behind यानी पीछे. Stove चूल्हा. earthen यानी मिट्टी. Henceforth का मतलब है उसके बाद. Hunger का मतलब है भूख. Cheeks यानी गाल. As the old man was doing this too frequently, they could not stand it any longer. चूंकि बूढ़ा ये काम कसरत से कर रहा था, वो उसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते थे. Finally, they ordered him to sit in a corner behind the kitchen stove. आखिरकार उन्होंने उसे बावर्ची खाने के चूल्हे के पीछे एक कोने में बैठने का हुक्म दिया. There they served him his food on a small earthen plate. वहाँ उन्होंने उसे एक छोटी मिट्टी की प्लेट में उसका खाना पेश किया. Henceforth, the old man did not even get enough food to satisfy his hunger. उसके बाद से बूढ़े को अपनी भूख मिटाने के लिए इतना खाना भी नहीं मिलता. He sat there feeling very sad and lonely. वो वहाँ बैठा बहुत उदास और तन्हा महसूस कर रहा था. He looked at the table where the others were enjoying their tasty meal. उसने मेज़ की तरफ देखा जहाँ दूसरे उनके मज़ेदार खाने से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे. Tears rolled down his cheeks. आंसू उसके गालों पर बह रहे थे. Often he wished for death. अक्सर वो मौत की तमन्ना करता था. So that's it for today's lesson. Subscribe to our channel Compare Education Pakistan. Like this video if you enjoyed. Press the bell icon so you can get our latest notification. And also like our Facebook page Compare Education Pakistan. Allah Hafiz.